here we are using shackle insulator. So एथिरे हमर जो यूज होची shackle insulator. shackle insulator रे ए जो आसिला हमर phase neutral और earth wire they are connected to shackle insulator. एटा हल्ला हमर MS iron, mild steel iron, or this is known as service bracket. Service pole at consumers premises. So एटा हमर होची कोन आ पई कि mild steel bracket fitted on the wall. This is also called mild steel bracket fitted on the wall, and weatherproof cable is provided for the connection. So amara shackle type insulator or pin type insulator is used. Pin type or shackle type insulators are used. The size of the conductor depend on the load. अच्छा कंडक्टर रो साइज होची डिपेंड करूची मैक्सिमम लोड ऊपर. हमरो जदी मैक्सिमम लोड 10 किलोवाट हबो घर रो मैक्सिमम डिमांड ताले लो mm स्क्वायर हमरो कंडक्टर यूज हबो. जदी हमरो 15 किलोवाट हबो ताटू अधिका रेंज रो वायर डायमेंशन रो वायर यूज हबो. जदी हमरो 20 किलोवाट हला further more cross section रो यूज हबो. So before that, first we will see the this is the low roof building. हमर दी प्रकार building normally use होची high roof, low roof. हमर normally two types of building, that is low roof building आउ गोटे होची हमर हाई रूफ बिल्डिंग. हमर दी प्रकार बिल्डिंग यूज होची. गोटे हला लो रूफ बिल्डिंग आ गोटे हला हाई रूफ बिल्डिंग. अच्छा हमर लो रूफ बिल्डिंग रो हमर केते क्लियरेंस रहिबो आ हाई रूफ बिल्डिंग रो केते क्लियर. हाई रूफ मींस डबल स्टोरीड बिल्डिंग. हाई रूफ मींस डबल स्टोरीड. High roof means double storied building. So rule number 77 says the height of service line conductor erected across a street must not be less than for low medium voltage ପାଇଁ କି ଆମର for low medium voltage it should be 5.975 meter, and for high voltage lines it should be 6.1 meter. सामाने जदि erected across a street, suppose this is the street, and here is the building located. So suppose nearest service pole is across the street. So this is the street, it is coming across the street. So
From here it is coming to the consumer's premises. So across the street, so this height for low and medium voltage line, it should be 5.975 meter. That means this height from the ground level, this is the ground level, this height from the ground level should be not be less than 5.975 meter, 5.975 meter. So this distance or this vertical clearance should not be less than 5.975 meter for low and medium voltage line. Low and medium voltage line, it should not be less than. So 5.975 meter, आमर जदि 4.5 नबा, it is wrong, or 5 meter, it is also wrong. We have to, for low medium voltage, the height should be must be equal to or more than 5.975 meter, and for high voltage it should be 6.1 meter. For high voltage, it should be more than 6.1 meter. 6.1 meter. So this is for service line across a street. This is for across a street. But the service line conductor erected along a street. Suppose the arrangement is like that. The arrangement is such that this is the street, and along the street, the service pole is along the street. Service pole is along the street, and here is the consumer. Here is the consumer. This is the along the street. So this clearance from the, this is the ground level, and this height should not be, height of the service line for low and medium voltage should not be more than, less than 5.490 meter. It should be equal to or more than 5.490 meter for low and medium voltage. For low and medium voltage. However, if we will have high voltage, जदि आमर हाई वोल्टेज नबा ताले हाई वोल्टेज रे आमर केते आसीबो 5.795 मीटर, 5.490 मीटर फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज. फॉर हाई वोल्टेज इट शुड बी 5.795, 5.795. आमर आसी जीवो ग्राउंड रो the bottom of the lowest conductor, that should be for high voltage. High voltage ପାଇଁ କି ଆମର କେତେ ହବ? For high voltage it should be 5.795, 5.795 meter or more. It should not be less than 5.795 meter. So इटा गला आमर लो मीडियम हाई वोल्टेज ପାଇଁ कि आउ आमर आसुची फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. नेक्स्ट इज कमिंग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. अच्छा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ପାଇଁ कि ग्राउंड क्लियरेंस केते रहुची? फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वी विल हैविंग फॉर एक्स्ट्रा हाई voltage, that is commonly known as EHV, extra high voltage. For EHV, the ground clearance should be 5.185 meter, 5.185 meter plus 0.305 meter for every 0.305 meter for every
kV for every 33 kV for every 33 kV. So for first 33 kV it is 5.185 meter. जदि आमे 66 kV नबा 66 kV हेले 5.185 प्लस 0.305 ताले केते आसीबो 5.185 प्लस 305 ताले एटा आसुची 5.49 मीटर. सेमती आमे जदि 132 kV नबा हमर that much of extra 33 plus 0.305 meter extra height should be taken from the ground. So next for next we will discuss what are the materials or accessories that are used for normally used for this service connection. So first होउची हमर कोन MS hook हमें देखिबा एठी गोटे जिंस that is mild steel hook तार काम होला कोन हमर जते बेले अर्थ वायर आसुची सर्विस पोल लु जते बेले सर्विस ब्रैकेट पाखु को आसुची दिस इज आवर सर्विस ब्रैकेट हमर जते सर्विस ब्रैकेट पाखु को आसुची से तो पुनी ताकू फिक्स करी टाणी की धरी रखिबो. सो सेति पई कि हमर MS hook यूज होची टू सपोर्ट द अर्थ वायर. हमर अर्थ वायर को सपोर्ट करिबा पई कि हमर होची MS hook यूज होची. नेक्स्ट these two are shackle insulator. Already we have discussed shackle insulator. अच्छा फेज न्यूट्रल गार्ड वायर रील इंसुलेटर तमर गोटे रील इंसुलेटर दरकार होची हमर गार्ड वायर को सपोर्ट करिबा पई कि दिस इज द गार्ड वायर. हमर गार्ड वायर रो काम होला कोन हमर जते बेले वाइब्रेशन होची वायर टा चांसेस ऑफ कोन छिंडी जिबार चांसेस रहूची तळे जे हमर से लाइन ओवरहेड लाइन तळे जी जीवा आसवा करुँच सेफ्टी पर्पज कि गार्ड वायर शुड बी यूज ताकू जो वाइब्रेशन लेस हम तुम विंड जो. सो फॉर दैट आमर जो गार्ड वायर आमर यूज होची ताकू सपोर्ट करुच्ची दिस इज रील इन्सुलेटर. तेणु जो आमर सर्विस कनेक्शन जाइथिबो सेठी निश्चिंत गोटे रील इन्सुलेटर थिबो. नेक्स्ट सैकल इन्सुलेटर विथ क्लैंप एंड बोल्ट नट. सैकल इन्सुलेटर तार नट बोल्ट क्लैंप ताको फिक्स करिबा पई सर्विस ब्रैकेट रे हमर सैकल इन्सुलेटर यूज होची. तेणु पर वन सैकल इन्सुलेटर सपोज 2 or 4 number of nut bolts are required to fix in the service bracket. So MS saddle लो काम होला कोन एठी जो हमर GI पाइप आसिला galvanized iron पाइप आसिला हमर जतेले सर्विस ब्रैकेट थ्रू एनर्जी मीटर पाखु को आमे ओआर आणुचे सेते बेले पाइप थ्रू रे आणुचे GI पाइप. तेणु GI पाइप हमर वॉल को सपोर्ट करिवो सपोर्ट करी जो रहिवो सेठी हमर MS सैडल यूज हबो. तो MS सैडल गोटे रु आ गोटे भितर डिस्टेंस हमर भ्यारी करूची 1 मीटर 1.5 मीटर. कंजुगेटिव MS सैडल भितर डिस्टेंस 1 मीटर हे पारे 1.5 2 मीटर. So that is not any specific 1 meter भी हे पारे 1.5 हे पारे 2 meter according to requirement हमर MS सैडल यूज होची. अच्छा डबल पोर आयरन क्लाड मेन स्विच गोटे यूज होची. DPIC मेन स्विच कॉमनली नोन एज DPIC मेन स्विच. अच्छा 6 वे आयरन क्लाड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जदि हमर 6टा रूम अछि बा 6टा सब सर्किट हेची 6टा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हेची तेणु हमको 6 वे आयरन क्लाड ICDB मेन स्विच 6 वे
6 way means 6 branches हमर दरकार हबो weather proof cable. This is the weather proof cable. Weather proof cable कोठु आसीबो सर्विस पोल बा सर्विस ब्रैकेट पाखरु एनर्जी मीटर पर्यंत. Suppose this is the example of a two storied building. Ground floor रे रहिला separate energy meter, top floor रे separate energy meter. So तमरो this is the main parts are required for service connection. So next होची अंडरग्राउंड केबल. जदि आमर अंडरग्राउंड कनेक्शन हेइथिबो दिस इज वन अरेंजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड कनेक्शन. अंडरग्राउंड पई कि आमर ग्राउंड भितर आमर कनेक्शन जाइछि. दिस इज द मीटर बोर्ड and this is the consumer installation. So this is one example of underground service connection. Next, so what we have discussed already, we have discussed that for underground connection, the supply of the consumer should be more than 25 kilowatt. So these are the basic requirement of underground and overhead service connection. So next class we will discuss about the details of what required, that is we will do an estimation for overhead and underground installation. Thank you.